As I told you already, today we have already 12 people joined in. Ranveer, Virat, Nikud, Sanjan, Meet, Nandini, Krishna, Manaswini, P, Devan, Vishagra. Very, very warm welcome, Becha Party. I hope you guys are going to have super fun with this session because we are going to have quizzes, we are going to have lots of learning, and we are going to have lots of fun. Right? मैं हमेशा ही म्यूट करना भूल जाती हूँ हमेशा भूल so sorry people, थोड़ा सा जुकाम है मुझे. So yes, you have to manage with me like this only. My goodness, I'm such a mess right now. But ठीक है, कोई बात नहीं. कभी कभी बुरे दिन होते हैं. Every time is not a good day, but any day that comes will bring better days along with it. So people, on that note, let's start with our session with the Prodigy series. What is acceleration? But as we always start with the game, what is the name? Knowledgehood. Bollywood kebab. Knowledgehood. So people, the chat is on. You guys are already in. If you are not in, go to the description of this video and click on the link and join the session just right away. So there is a very simple way to join the session. I'll show you once. Just go to this, like the video while you're going, switching down, and click on the description of this video. The very first thing, watch motion live on wave right now. Click on the first link and you will be here. ठीक है, जल्दी से आ जाओ, quickly आ जाओ. अरे यार, you guys are so good with this game यार. How? कैसे करते हो ये? कैसे? मतलब you guys already got the thing without even getting one wrong word there. कैसे करते हो यार? मैं नहीं खेल रही. This is so bad. So bad यार. So bad you guys are. Meter per second square. Oh, Ranveer, all the best. Meter per second square is the unit of acceleration. Okay, चलो एक और try करते हैं. Let's try one more. Let me try. Let me hope कि we will get this. Let me just hope only because you guys will never let me win. ये तो पक्का है. Okay, tell me. Tell me what is this one? अरे don't be Ranveer. You are going to rock it. Tension ही नहीं लेगा. You guys are very good. Come on. रणबीर तुम चले जाओ यहाँ से. तुम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो यार. देखना जरा. एक सेकंड ही लगाते हो. संजम जी ने गलत बताया. वेरी गुड. आई लाइक यू. लव्या श्रव्या सो बैड यार. सो बैड. और दैट साउंडेड वेरी राइमिंग. लव्या श्रव्या क्या बात है. ऐसे लग रहा है दोनों को बुला रही है. दोनों सिस्टर्स हो. सुपर गुड. बाकी इट इज ओके. एक्सेलरेशन की वजह से दो कटे उतना ही काफी है. उतना ही ठीक है. So people, yes, today's class is about acceleration, and if you are not into the session, jaldi se get into the session. Go to the description of this video and get into the video. Wave session right up. ठीक है. Ranveer, the season is such we have to be taking care of ourselves. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. जुकाम है जाते जाते जाएगा. So yeah. Let's start with what we have been doing till now. So, everyone, revision time. Are you ready? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Revision time it is. तब तक मैं अपनी chat भी on करती हूँ. Everyone in the chat is also there on the YouTube as well. जैसे हो गया अभी 6 जुलाई तक वेकेशन. वेरी गुड श्रव्या. हैप्पी किड्स. हेलो बच्चा पार्टी. अच्छा, सबने जो भी यहाँ पे लोग हैं सबने लाइक करा. सबने लाइक करा वीडियो को. हाँ या ना? पहले ये बताओ. Did you like the video already? Yes or no? If not, go back and like it. Otherwise, start off हो रही है. धमकी देखो जरा भावना मैम की है ना. Very bad भावना मैम. Very bad. ऐसे कौन करता है बच्चों के साथ? But go and like the video quickly and then come back and then we will be discussing. So people, the knowledge it to you are rockers. You have to tell me what is motion. Can you define what is motion? Can you define what is motion, Bacha Party? Yes, quick. Chat is on. I am here. What is motion? Hello, Chitra बच्चे. हाँ बिल्कुल निवेदा. I have missed it. Thank you very much for reminding me. Very good. रणबीर दोनों जगह आंसर कर रहा है. ऐसे क्यों हो रहा है? पब्लिक चैट ऑन है बेटा. यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो. Motion is when a body changes its position. When a body changes its position with respect to what? With respect to time and surroundings. What is a better word for surrounding, people?
What is the better word for surrounding? What is the better word for reference point? Is called to be in motion. Okay, so let's see. अब इस चीज को कौन आंसर करेगा और कौन जल्दी जल्दी आंसर करेगा? Let's talk about distance and displacement. ठीक है? Who is a scalar? Distance or displacement? ओहो, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप यहाँ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो. Got it, श्रव्या, thank you. Distance, okay, distance is a scalar. What is displacement? What is displacement? Quick. अब सब अदर आंसर आ गया. Who is distance or displacement में who is direction dependent? Who is direction dependent? Who is direction dependent? पक्का चलो चूज करो. Who is direction dependent? Distance or displacement? Who is direction dependent? रणबीर, you are going to do rocking बच्चे, तू टेंशन मत ले, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा. Who is direction dependent? Distance or displacement? The answer is अरे पोपटलाल, यही करना चाहिए मुझे. The displacement is direction dependent. Now if I ask you cholo direction, tell me who is path dependent? Who is path dependent? Who is path dependent? Come on. Who is path dependent? Quickly. तो जब यहाँ क्विज ऑन हो यहाँ आंसर दे देना, और जब यहाँ आंसर दे रहे हो तो वहां क्विज ऑन हो जाएगी. Path dependent. Come on quickly, Chitra, join the session. Who is path dependent? 3, 2, 1, time is up. Let's see. अरे वाह, तालिया तालिया तालिया. Now you guys know. The path dependent quantity is distance. Out of distance and displacement, who has the unit meter? Out of distance and displacement, who has the unit meter? क्या बात है. I am just confusing and you guys are super. Very good, very good. हाँ, यही तो इतना excited होते हो तुम भूल जाते हो लाइक करना. Go and like the video. अभी के अभी. Go and like the video. अच्छा, who is the wife of sorry, displacement की wife का नाम क्या है? What is the name of displacement's wife? Very good, Nandini. Love you. What is the name of displacement's wife? क्या बात है. और स्पीड किसकी वाइफ है? स्पीड किसकी वाइफ है? स्पीड किसकी वाइफ है? जल्दी बताओ. अरे वेरी गुड. चल, अगर इतना सब कुछ याद है तो इनके बच्चे तो याद होंगे ही. यू डेफिनेटली रिमेम्बर देयर किड्स. सो टेल मी, आउट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों के कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी किड्स दे हैव? वेरी गुड, वेरी गुड. सारे के सारे बच्चे किस पे गए हैं? सारे के सारे बच्चे किस पे गए? मम्मी पे. पापा पे कोई नहीं गया है, सब मम्मी पे गए. अच्छा बताओ, who is that kid who always follows everything which their parents say? वो वाले बच्चे का नाम क्या है? Who always do everything as their mama and papa say. एकदम बच्चा, अच्छा बच्चा है. Who is that? अरे वाह मैम, यूनिफॉर्म बच्चा है. What does uniform बच्चा do? What does uniform बच्चा do? हाँ, झूठी श्रव्या, झूठी. What does uniform बच्चा do? Come on, tell me. Equal distance and equal time. Very good, Neil. Super great answer. It is covering equal distance in equal time. Super correct. Acha, which is that kid who does anything what comes to his mind instantly? Who is that kid? वो वाले बच्चे का नाम क्या था जो उसका उस वक्त मन करता है वो करता है? क्या बात है रणवीर. The answer is, I'm so sorry, instantaneous, momentary. Whatever this kid wants to do, it does that. So instantaneous is very short distance in very short time. Right, people? How do we define instantaneous? Very short in very short time. Let's talk about मेरे वाला बच्चा कौन है जो कभी बात नहीं सुनता, सुन भी लेता है तो अपनी मर्जी से सुनता है? Who's that? मैं नॉन यूनिफॉर्म बच्चा हूँ. देखना कितने बदतमीज बच्चे हो. बोल भी रहो मैम, आप वही नॉन यूनिफॉर्म बच्चा. बोल नहीं सकते नहीं मैम, वी लव यू.
So non-uniform kid means will do the thing but on their own. So unequal distance is unequal time. Now I am saying both are unequal. Doesn't matter. One quantity is also unequal. It will be called non-uniform. Right? Tell me, how can I make my kind of kid into Shravya, जो झूठ बोल रही थी, into Shravya type of kid? Yes. If I want to change non-uniform into uniform, that is average speed. What is the formula of average speed? What is the formula of average speed? याद है? Yes, very good. It is ma'am Tiddu. Tiddu upon Tittu. टिट्टू की शादी में जरूर जरूर आना. सोनू और टिट्टू की शादी कुछ ऐसी थी ना? नहीं यार, मैं नाम भूल रही हूँ. वो मूवी का नाम क्या था? सोनू के टिट्टू की शादी है ना? कुछ था ना, ऐसी सी मूवी थी ना एक. थी तो सही यार, थी पक्का थी. आई रिमेम्बर, सोनू की टिट्टू की शादी. So टिट्टू से टिट्टू को डिवाइड कर लो. So this is what we have been doing and we have done. So बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अभी, सोनू की टिट्टू की स्वीटी है ना? देखा? वेरी गुड जॉली, थैंक यू फॉर दैट. सो टिट्टू हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है, टिड्डू इज ऑन द न्यूमरेटर. ओके, सो बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट ब्रदर पैरामीटर्स ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन. बट सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन. कितने लोगों ने करा? हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस? करा था? अरे शॉर्टकट में किया था, है ना श्रद्धा? एक शॉर्टकट ही होता है हमारी जिंदगी में बेटा. पेपर पूरा चेक होता है. देखे फिर जॉली, आर यू द होमवर्क रॉकर्स और नॉट? So तने इज द होमवर्क रॉकर. श्रव्या ने जो शॉर्टकट में करा था, ये देखो उसका शॉर्टकट. यहाँ पर इससे बड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला टोल्ड बाय अभिषेक सर यूज करा है. वेरी गुड. चलो अभी देखते हैं श्रव्या और तने दोनों के फॉर्मूले से कैसे आंसर आता है. राइट पीपल? नंदिनी, कोई बात नहीं बच्चे, बट इफ यू डू इट, इट विल हेल्प यू योरसेल्फ. राइट? सो कार गोज फ्रॉम अ टाउन ए टू अनदर टाउन बी. सो हमारे पास दो शहर है. एक शहर में अभिषेक सर रहते हैं, एक शहर में भावना मैम रहती है. वेयर डज अभिषेक सर लिव? डू यू नो वेयर डज अभिषेक सर लिव? किसी को पता है? अंडमान निकोबार में भेज देना. हाय. बैंगलोर. सो ही लिव्स इन बैंगलोर. एंड भावना मैम कहाँ रहती है? किसी को पता है? पता है किसी को भावना मैम कहाँ रहती है? दिल्ली. श्रव्या दिल्ली. रणवीर को पता है. भावना मैम लिव्स इन देहरादून. I am a Delhiite, but I stay in Dehradun. So a car goes from Delhi, Bangalore to Dehradun. मैंने बुलाया एक ऐसे को कि आओ पार्टी करते हैं. उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ. So he just drove to my place at a speed of 40 km. बट यहाँ आगे मैंने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ भागना, मैं नहीं यहाँ रुक रहा. He drove at a faster speed. भाग लिए, कट लिए सीधा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता. I cannot live here. I'll go. So अब बताओ भाई उनकी एवरेज स्पीड क्या थी? So how to do it? Now if you want to do, अगर हम इसे 60 plus 40 by 2 कर दे, what we think of average, will I get the right answer? The answer would be 100 upon 2, which is 50 kmph. Will it be the right answer? The answer is no. चाहे वो भागे, उल्टे पाव भागे, but we both are physics teacher, we cannot give you a wrong answer. So how to go about this question? So to go about this question, one thing is very fixed. Whenever you go from one place to another and going back to the same place, your distance is going to be same. कोई बात नहीं, वो बैंगलोर से देहरादून आए, मैंने इतना तंग किया कि भाग गए, but the distance from Bangalore to Dehradun will not change. So ideally, formula of V average, which is टिड्डू, सोनू की टिट्टू से शादी, ठीक है, हमने नाम चेंज कर दिया. So this is going to be the same thing. So we have to consider distance, which is total while he comes and goes, and time, which is total while he comes and goes. So ideally first हम करेंगे the proper method of doing it, then हम जाएंगे अभिषेक सर के method पे. So total distance, if I am going from A to B, the distance let's say x है, तो
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x plus x which is 2x. Yes or no? And total time. Now time निकालने के लिए we have a formula. Speed is equals to distance upon time. So time is nothing but distance upon speed. So while he is coming, he is taking time as s upon 40. And while he ran away, कि बस भावना मैम आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, x upon 60. So when we have this, there is a very simple shortcut here as well. If you do not want to add up or do the LCM, just multiply the denominator and add the numerator by switching them. तो उल्टा कर दो, right? So 100x upon 2400 means x by 24. This is what I am getting as a total time. Now the question becomes super easy. Why? Because we have to just put in the formula. So my V average will be 2x upon x by 24, which is 2x into 24 by x, and the answer is 48 kmph. Right? तो सर उल्टे भाव भाग लिए, बट भागे क्यों? किसी ने पूछा नहीं भावना मैम आपने ऐसा क्या करा? मैंने उनकी मोमोज की चटनी में चीनी मिला दी, उन्हें खाया, उनका मुंह का टेस्ट खराब हो गया। फिर उन्होंने स्वीट डिश मंगाई, मैंने उसमें मिर्ची मंगा दी, तो बेचारे तो भागेंगे ना उल्टे पाव। So this is what is 48 kmph, which is Tanay have definitely got it. So lots of balloons for Tanay and Shravya. But Shravya wants to go with the easiest method. Now ये easiest method क्या है वो आज के फॉर्मूले के बाद पता चलेगा. Now what is this? I'll tell you. See, if you go by this formula, this is the basis. ये कभी गलत नहीं. But talking about, there is one particular condition where we have V average like shortcut formula, and what is that? What is that, Shravya? That formula is 2v1 v2 upon v1 plus v2. Now ideally this formula is applied under two conditions. What is that two condition? And if you see here, we have already done this, right? Already done this. 2v1 v2, ठीक है? Twice of v1 into v2. This is what we are doing here. Twice of v1 into v2 upon v1 plus v2. This formula is applied. How did you got 2x upon? बच्चे क्या नहीं समझ रहा है रणबीर? बच्चे अगर मैं जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस तो सम हो जाएगा ना. जाते हुए अगर रोड x किलोमीटर थी तो आते हुए भी x थी. टोटल डिस्टेंस विल बी 2x. यस और नो? यस और नो? One is distance should be same. Perfectly correct, Ridhima. Perfectly correct. This formula can only be applied when your distance between two places is same. Now there is one more formula that is going to be very handy to you. And what is that? If you want to apply a formula which is v1 plus v2 by 2, even this formula is true. So this formula is true when your distance is same. Okay? If you are going equal distance. Or this formula is applied when your acceleration is same. Now what is this acceleration? That is what we are going to understand today. So V average shortcut formula, you guys got it today right away. Got it, Ranbir? Okay. तो अब हमारा quiz time आ रहा है. Are you ready? Are you ready? No need. It is if your acceleration is constant. If your acceleration is constant, you can apply this. If your acceleration is constant. Okay? Okay. So let's go with the recall quiz. Question number 1 on your screen. When an object covers equal distance in equal interval of time, the motion is 30 seconds. Go for it. Come on. Definitely, Ranveer, you are most welcome to do that, बच्चे. बादल, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है. Hi, Himlita. Oh, so sorry, Yuganshu. Hello, Kamesh. Yes, so everybody who's into the session, super great. If you're not into the class, do make sure you are here on YouTube. Yes, Arun says it's A. Is it A? So Ranveer, Shravya, Nandini, Sridhar, Arohi, Kamal, Samyukta, Kushal, Ridhima, Sajini. Very good
इतनी फुल स्पोर्ट को क्या आ रही Super good. Very well done. The answer is when an object covers equal distance in equal interval of time, the motion is uniform. नहीं नहीं रणवीर प्रैंक कॉल के लिए थोड़ा ज्यादा अर्न करना पड़ेगा. If you get 100%, then we will think about it. ठीक है क्योंकि आप बच्चे ऑलरेडी 90% वाले हो तो 100% अगर ले आए तब ठीक है. चलो हाय चित्रा बच्चे नहीं नहीं श्रद्धा कोई इसमें मोल भाव नहीं है. ये थोड़ी ना कि भैया इतने में दे दो. कभी शोरूम में जाके बोले ब्लैकबेरी के कि भैया 19,000 का सूट है 18,000 में दे दो 18,500 में दे दो. नो नो नो. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. Average speed especially helps us to measure overall speed of an object in the case of dash kind of motion. 30 seconds people. 3 2 1 go. Exactly. Some of the best though. No cheating allowed. Go on people quickly. Arun, are you going to give me the answer बच्चे? Hi Renu. हाजी बादल बोलो. I'm so sorry बच्चे मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है. So ideally I'm not feeling very well. Come on. In 3, 2, in 1. I hope 100 ना है. देखना कैसी टीचर है. नहीं हाय मेरे बच्चों का 100 क्यों नहीं आया. तो रणबीर नील समय अरे नहीं आया. कमल श्रीधर कृष्णा की पिटाई होगी. लव्या की पिटाई होगी. लाइबा so sorry. So संयुक्ता रिधिमा मूची 75 नीचे आ गया ग्राफ. But why guys? Always good. नहीं रणबीर आप खाओ बेटा. So people, average speed helps us to measure overall speed of an object in case of which kind of motion? It is non-uniform motion. That's what I said, that if I want to convert non-uniform to uniform, average speed comes to my savior. Right? Yes or no? समझ आई? Right? Good. Let's go to the last question. A body goes from A to B with a velocity of 20 meters per second and B to A with a velocity of 30 meters per second. The average velocity of the body during the whole journey. Chat off. कोई cheating नहीं करेगा. Question दोबारा पढ़ो. A body is going from point A to point B with a velocity of 20 meters per second and while it was returning again. मैंने दोबारा उनको बुला लिया कि ठीक है इस बार मैं मजाक नहीं करूंगी आप आ जाओ. तो वो फिर से फंस गए. फिर से अब अभिषेक सर आ रहे हैं मुझसे मिलने. And this is point A and this is point B. Right? Now while he was coming, he was very cautious. यार जाओ नहीं जाओ. His velocity was 20 meters per second. But फिर से मैंने उनके साथ prank कर दिया. So he ran with 30 meters per second back. You have to tell me what is the average velocity of the journey. 0, 25, 24, none of these. 30 seconds people because I have given you enough time. 3, 2, 1, go. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. तो cheating नहीं करेगा? Yes, let's see. Let's see. मैं देखने गई थी कि भाई कोई आंसर तो नहीं दिख रहा है. Let's see, let's see, let's see. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. क्या लगता है? नंदनी रणवीर दी आप पोपटलाल 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 की जय करो. सबके सब पोपटलाल की जय करो. हाँ दी मुबारक हो. नील शव्या आरोही नंदनी गॉट इट. Yes, Neil. Yes. The catch of this question was it was not speed. It was velocity. So direction matter. If Abhishek sir started his motion from Bangalore, came to Dehradun and went back, his displacement is 0. And V average is total displacement upon total time. So here total displacement is 0. Hence the answer is 0. Yay! Hi Akshu. गड़बड़ हो गई.
Yes, that is why it is very important to read the statement. Very important. Got it? चलो अब चलते हैं हम अपनी एक्सेलरेशन की तरफ. तो अभी परसों 22nd को मेरे निक्कू का बर्थडे था. यू ऑल नो निक्कू. सो आई गिफ्टेड हिम अ टॉय कार which he can run with remote control and foot pedals and everything, and he's super excited. So like Chaggu is playing with his new toy car, he's also playing. Now there are two paddles in his car. One is a pedal when he presses, the car rushes. Zzz. One when he presses, the car goes brake. So what is that? I guess every one of us have sat in a car with a person, or maybe some of us may also try driving it. What is this that makes the car go zoop, and what is it that breaks its speed? There is something called the word accelerator. अब सच्ची सच्ची बताओ, how many of you have a scooty that they drive? How many of you have a scooty that they ride? बेटे ये जितने लोगों ने यस बोला है ना, अभी सबकी शिकायत करती हूँ. कितने साल के तुम लोग? लाइसेंस है तुम्हारे पास? सबकी शिकायत करती हूँ फोन करके. बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है. 10 people have their own scooty that they ride. अच्छा चलो. Truthfully, how many of you have sat behind your friend riding a scooty or a bike? कमल ने बोला मैम मैंने एक बार चलाई है, एक बार. नील कितना भोला बच्चा है ना. मैं सिर्फ साइकिल चलाता हूँ. मम्मी मम्मी मैम मम्मी पापा की है. श्रव्या बेटा आपके पास लाइसेंस है चलाने का? 18 साल के हो गए आप. ओके चलो. लेट्स से कोई बात नहीं, चला लो. मैंने भी सीखी थी. नहीं मैंने तो साइकिल चलाना 10th में सीखा था. आई वाज सो बैड. आई डिडंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल. तो मैंने 10th में साइकिल चलाना सीखा. देन व्हेन आई वेंट टू माय मास्टर्स, देन आई गॉट माय स्कूटी. सोच रहे हो मैंने 3 साल कॉलेज कैसे करा है? बसेस, मेट्रोज. यस प्रणव, व्हाट इज इट? है ना, फ्रेंड पे भरोसा नहीं है. मम्मी पापा पे है, भाई पे है. सो इफ यू हैव एवर सैट बिहाइंड अ पर्सन एंड यू माइट हैव सीन, कभी कभी ना कोई साइड में आता है और रेस लगाने का मन करता है कि आजा बेटा, आज तो पूरे मजे लेते हैं. सो व्हेन यू पुट दैट हैंडल, जैसे था ना रामछोड़ दास ठानछड़ वाली मूवी में, 3 इडियट्स में, इंडक्शन मोटर कैसे चलती है? ग्रुम ग्रुम ग्रुम. ऐसे ही जब स्कूटी का हैंडल ड्रू ड्रू द बाइक और द स्कूटी और द कार पिक्स अप. बट जैसे ही मामा जी दिखते हैं, डू यू नो हु इज द मामा जी? हु इज द मामा जी? कौन है मामा जी? कौन है आपके मामा जी? के गाड़ी रास्ते में दिखते हैं आपको? चिट्टू सर है मामा जी. निक्कू कौन है बच्चे? निक्कू मेरा मेरा नेफ्यू है बेबी. एक बार जब पांडु, पांडु कौन है प्रणव? Yes! Mamaji is your police wale uncle. So if you are riding and racing and you suddenly saw traffic police wale uncle, will you be able to do the same? उनको देखते ही तो ड्रोम ड्रोम ड्रोम, you will put a brake, right? Right? पिटाई होगी प्रणव. मेरी भी होगी, तुम्हारी भी होगी. तो पाटू बोल रहे हो, मैं मामा जी बोल रही हूँ. दोनों की पिटाई होगी. So ideally, when you go with your handle groom groom, you are increasing the speed. When you see the mamaji, you are decreasing the speed. In both cases, your speed is decreasing. That is what the two paddles in a car does. When you put on one paddle, it increases the speed. When you put on the brake, it decreases the speed. In both cases, the speed is changing. And hence we call it a non-uniform motion. बच्चे 1.69 करोड़ था. अक्षु कम से कम वैल्यू तो ऐड मत कर. तू अपना 1 करोड़ मत ऐड कर उसमें. Right? So ideally, whenever we are talking, we are going with the same speed, we go with a constant speed. But while we accelerate or while we brake, the velocity changes. That makes it which kind of motion? Non-uniform motion. So non-uniform motion means acceleration. But if the speed is constant, it's called uniform motion, that is constant speed. Right? So perfectly defined by Lavya. That is, if a puppy, see this puppy is doing nothing. This puppy is doing nothing. ये अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार जिंदगी के पल गुजार रहे हैं. It is on the road.
the skateboard is moving and he is not even putting an effort to stop it or fasten it. So he is going with a constant speed. Uniform motion, uniform puppy, sweet puppy. कोई नाम रखेगा इस puppy का? What should be the name of this puppy? Uniform motion में जा रहा है. टॉमी यार रणबीर नो यार टॉमी तो नहीं रख रही मैं प्लीज टॉमी तो बिल्कुल नहीं रख रही मतलब कुछ भी रखूंगी टॉमी नहीं रखूंगी मैं Duggu is cute, Nandini. Duggu is cute. Pogo is also cute. Dimpy. श्रीधर यार लड़की का नाम नहीं रखना है. भोलू हाथी है. लव्या नहीं. Jeff. Oh my goodness. Ranveer changed it. Man, Tommy नहीं रखना. I have a fancy name. Jeff. शेरू. प्रणव मेरा बच्चा. Coco is cute. सुपर डॉग कमल ज्यादा हो गया. चिंटू नील बहुत पिटाई करेंगे चिंटू सर तुम्हारी. आलू ब्रेड भी रख सकते हैं. ही लुक्स लाइक अ हॉट डॉग. कोको रख दो. कोको रख दे. मोती बड़ा सही नाम है. संजन ने बोला मैम मोती इंडियन नेम पूरा. डुग्गू है क्यूट है. डुग्गू इज क्यूट. चलो डुग्गू डुग्गू रख देते हैं. डुग्गू रख देते हैं. वैसे तो मुझे बहुत सारे अच्छे नाम लगे थे. डुग्गू ठीक है. पोगो भी क्यूट था. डुग्गू ठीक है. सो डुग्गू यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म पोजीशन में जा रहा है. लव यू डुग्गू. बट इफ डुग्गू को मामा जी भी रोकेंगे वो तो वहां पे भी नहीं रुकेगा. बट इफ his velocity change. By the way, why will his velocity change? Obviously, even though Duggu is doing nothing, he's that innocent, cute boy. But there is friction. Now, because of friction, this skateboard will eventually come to rest. So, when the change in velocity is there, acceleration is there. So, constant velocity, ये आराम से चल रहा है पूरी जिंदगी एकदम स्ट्रेट. ये है हमारे चिंटू सर. पहले स्लो है. थोड़े स्लो तो है तुम्हें पता ही है. थोड़ा है स्लो मतलब कोई बात नहीं अब है तो है. बट जब वो रेस में आते हैं ही गोज झक 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 एंड भाग लिए बेटा अब आ जाओ तुम. राइट. सो दिस इज व्हाट इज इट. सो पीपल लेट्स हैव अ क्विक क्विज है. छोटा सा क्विज करते हैं. इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड इन डुग्गू? Will you say Duggu going at constant speed? Is there an acceleration? Yes or no? Yes or no? चिंटू अभी तो नाम तो डुग्गू का रख रहे थे. चिंटू नंदरी. हाँ है ना नील. चिंटू नहीं रखना है. बहुत पिटाई करूंगी मैं. तो रणबीर नील संयुक्ता नंदनी कमल. अरे पोपट लाल क्यों कर रहे हो? चिंटू सर की बात नहीं हो रही थी. दिस वाज डुग्गू. डिग्गू के केस में देयर इज नो एक्सीलरेशन until there is not friction. But as we talk about friction coming into picture, there will be deceleration. So what is acceleration? You guys have already defined, ma'am. It is the change in velocity per unit time. That means rate of change of velocity is my acceleration. Now you guys, if I say rate of change of velocity, we can have a simple formula. Let's say I am talking about Duggu only, or let's say I am talking about Ananya sir. Ananya sir, let's say घर से निकले किससे मिलने? Do you know अनन्या सर घर से किससे मिलने निकले थे? अनन्या सर घर से निकले थे किससे मिलने जब उनकी स्पीड ऐसे बढ़ी थी? बताओ बताओ. अरे नहीं पता. नहीं भावना मैम से क्यों मिलेंगे वो? दिल्ली किससे मिलने जाते हैं अनन्या सर? खुद से सोच लो. दिल्ली किससे मिलने जाते हैं अनन्या सर? हम कुछ नहीं बोलेंगे. हमने कुछ नहीं बोला. We didn't say anything. लेट्स से वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं. ठीक है. तो पहले उनकी स्पीड धीरे थी और जैसे ही गर्लफ्रेंड का फोन आया स्पीड तेज हो गई. सो इनिशियली ही हैड अ स्पीड व्हिच इज यू. फाइनली जैसे ही गर्लफ्रेंड का फोन आया क्या करा? भागना है भाई मार पड़ेगी. सो दिस इज योर फाइनल स्पीड. V is your final speed. So what is the acceleration? Final speed minus initial speed upon time. Because time is very important. Time से नहीं पहुंचेगा गर्लफ्रेंड की मार फिर पड़ेगी. So ideally acceleration is given by the formula V minus U by T. Now if we have to look at the unit, what is the unit of V minus U? What is the unit of V minus U? Go girl.
What is the unit of v minus u? पिटाई और गर्लफ्रेंड से पिटाई के नाम पे बड़ी हंसी आ रही है बेटा, सब पिटे हुए इसका मतलब. It will be meters per second. What is the unit of time? What is the unit of time? It is second. So ideally unit क्या हो गई? Meter per second और time is in denominator, so meter per second square. That is the unit of my acceleration. So 15 seconds, 3, 2, 1 go. Done क्या? पिटाई रणबीर? पिटाई हुई है तुम्हारी? कितनी लड़कियों ने पीटा तुम्हें आज तक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये स्कूल की अच्छी यादें हैं, बाद में याद करोगे. बहुत पिटा हुआ स्कूल में. मैंने भी बहुत लोगों को पीटा है. आई हैड लॉट्स ऑफ गाइस फ्रेंड्स जिनको मैंने बहुत पीटा है. So रणबीर, नंदिनी, नील, कमल, संयुक्ता, रिधिमा, साजनी एंड जॉली गॉट इट. श्रीधर क्या कर रहा है बेटा? सुशांत क्या कर रहा है? 76. तुम बेटा आज नहीं जीतने वाले हो. आज तो मैं ही जीतने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू कॉल एनीवन. अच्छा, यू आर डन राइटिंग. Oh, ऐसा शब्द है वेरी बैड. इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी शिकायत करते हैं, रुको. Okay. Why the SI unit is meter per second square? We already figured that out. The next question is, does acceleration implies high speed? Now this means that whenever there is acceleration, does we only mean that the speed is increasing and only increasing? What do you think? ना कुशाल, तुम्हारा first percentage था 95. अब तुम अगर 95 से नीचे आने की बात करोगे तो इट्स नॉट गुड ना. ऊपर जाना चाहिए, नीचे थोड़ी ना आना है. So we'll try to get better. Okay? U is not first velocity, Labhya. U is your initial velocity. ठीक है? It's your initial velocity. अचार में नील मुझे समझ नहीं आया. School girls and boys are separate, not or and weird. ट्यूशन जाते हैं मेरा बच्चा. Okay, so Kamal, Nandini, Neil, Samyukta, Ravi, Ridhima, Jolly, Shabya, and Laiba got it. Sajini beta पिटाई होगी तो 76% people. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Fireworks करेंगे. ट्यूशन में भी सेपरेट थे. सैड. बेचारे तुम लोगों की लव लाइफ कैसे डिस्कस कर रही हो मैं. बट आई लव टू डू ऑल दिस, यू नो ना. मुझे बड़ा मजा आता है. आई लव टू. So people, the answer to the previous question is not necessary. It is not necessary that the speed is always high means acceleration. Acceleration means a change in speed. It can also mean decreasing speed. And when it is decreasing, it is negative. So ideally, velocity is a vector quantity. So is an acceleration. So when a is v minus u by t, the velocity is an vector quantity and so is acceleration. So it also has positive and negative value. It can even be zero. Zero कब होगा acceleration? Can anyone tell me when it could be zero? Very good रणबीर. देखना सबके सब अलग चल रहे हैं दुनिया में. Very good, Ranveer. Very good. Yes, when the body is going with uniform motion or constant velocity. Positive when your V, that is final velocity, is greater than initial. But negative in any case when V is less than U. So in case of Dugu, as I told you, even Dugu is going to come to rest because of friction. So ideally, the final velocity will be 0. But initially he was going with some initial constant velocity. So in this case, we know कि Dugu पे क्या लग रहा है? He has retardation or negative acceleration, that is deceleration, right? So if the speed increases, positive acceleration, we just call it by acceleration. But जब हम कोई शैतानी करते हैं, we are famous with that name. ये तो तोड़ती रहती है, ये तो गिरती रहती है, ये तो भागती रहती है, ये तो लड़ती रहती है. So if the acceleration does negative effect on velocity, that is it reduces it, it is called with two new names.
retardation or deacceleration, right? Deacceleration. So, ideally, talking here some very important things. If I talk about acceleration is a vector, I'm not wrong. Acceleration is a vector. But this vector ka positive, negative doesn't give me the direction of the motion. What do you mean by that? If I say I am going from point A in this direction, this is V positive, yes or no? Yes or no? If I say I am going in this direction from point A, this is V negative, right? Now, ideally, if I say my acceleration here is in this direction, what is the sign of acceleration, people? What is the sign of acceleration? Come on, tell me. What is the sign of acceleration? Pakka? Is it positive or negative? The sign of acceleration will be positive or negative in this case. Pakka pakka? Lock कर दिया जाए? The answer is yes, it is positive. But in this same case, I say the acceleration is acting like this. Then what is the sign? Then what is the sign? Then what is the sign? The answer in this case that the sign of acceleration is not with respect to motion. It is with respect to the direction of velocity. Shit, you guys got 100%. वो man, तो मैं फंस गई. ये तो मैं फंस गई. अरे यार पूरी पूरी तरह फंस गई. बल्ले बल्ले देखो जरा खुशी देखो तो अभी करते हैं सेशन के बाद. ठीक है. So ideally in this case if this is the acceleration, what is the sign of this acceleration? Positive or negative? देखो खुशी देखो तुम लोगों की. शर्म नहीं आती है? मैम को हरा के खुश तो इतने होते हो ना तुम लोग. क्या ही बोले आजकल के बच्चे. The acceleration in this case will be positive. It is the direction of the velocity, so it will be positive. But if it is acting in this direction, it will be negative. So ideally, ये वाला और ये वाला same है और ये वाला और ये वाला same है. Direction matters with the direction of velocity, not with the motion. Yes? Okay, chalo, let's see this. In negative acceleration, velocity of a body remains constant, is zero, increases or decreases. Give me the right answer. Give me the right answer. Yes, quickly. Come on, people. So time is going in 10 seconds, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, and in 1. Time is up. So Ranbir, Shravya, Sridhar, Neel, Kamal, संयुक्ता, अद्रितो, शुभायो, नंदिनी और विराज. यार इस क्वेश्चन के लिए बोलना चाहिए था मुझे. ये तो गड़बड़ हो गई. मेरे को तो गड़बड़ कर दी तुमने. है ना नील? नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी सिर्फ क्विज़ेस में. The answer is it decreases. Okay. So, negative acceleration if the final velocity is less than the initial velocity. Constant and variable acceleration are also there. If the velocity is increasing or decreasing at a constant rate, we call it constant acceleration. But for a car moving in traffic, can we have acceleration constant? If we go out on a scooty or in a car, the speed sometimes increases, sometimes decreases. So no, it is not feasible. Right? So we have lots of things and now it is quiz time. पहले से बता दो किसको कॉल करना है. एक और बारी 100 करते हैं ना. अब करते हैं 100%. ठीक है. एक क्या सर कभी फोन नहीं उठाते. कभी फोन नहीं उठाते. He never answers my call. He never.
प्रीतेश सर को करना है, प्रीतेश सर ने भी नहीं उठा, अरे प्रीतेश सर का नंबर ही नहीं है मेरे पास। हाँ प्रणव अभी करती हूँ, रुक जा। अनन्या सर को ही करते हैं, ठीक है, अनन्या सर को करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से कुछ करते हैं, उसके बाद अनन्या सर को फोन करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन, अमृता सर कौन है बे? कुशाग्र अमृता सर कौन है? अमृता भी और सर भी, बाप रे बाप, ये तो अनन्या सर को चैलेंज वाली बात हो गई। नहीं, कुशाग्र ने तो अमृता सर लिख दिया बेटा, अब तो गए। वाह प्रणव, नो चैट शेयरिंग, आई विल नॉट पुट द चैट ऑन, ठीक है। चैट शेयरिंग नहीं करनी है बच्चे, नो, नो शेयरिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स। Acceleration produced by a body is what? People, no sharing of your personal details on the chat, otherwise I'll not put the chat on. Simple. Acceleration produced by a body is dash. Scalar quantity, vector quantity. रणबीर, श्रव्या, नील, श्रीधर, कमल, अद्वितो, सुभायो, सुमय, अरे बाप रे बाप, श्रीधर बेटा तू क्या कर रहा है? क्या नहीं समझ आया मेरे बच्चे को? The right answer is it's a vector quantity. Definitely Ranveer, I love to come there, but right now I can't. It's a vector quantity. Next one. The formula of finding acceleration is dash. 3, 2, 1, go. Go on. Go on, people. अगर अनन्या सर की क्लास है तो वो उठाएंगे नहीं। रणबीर, श्रव्या, वैष्णवी, संयुक्ता, जॉली, कमल, नील, अद्वितो, विराज एंड तुषार रिकॉर्ड दी, ठीक है। Okay, 89 people, 89, very good, very good, very good, very good. फिर एक सर को ट्राई करना, देखना श्रव्या मतलब उल्टा, वो मेरा फोन पैसे भी नहीं उठाते, तो उनको तो छोड़ ही दो ना, अनन्या सर तो फिर भी उठा लेते हैं। So it is v minus u by t. Okay, last. A car accelerates from 3 to 15 in 6 seconds. What's the acceleration? 30 seconds. 3, 2, 1, go. Go. गलत आंसर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, इधर उधर घूम रही है दुनिया। 3 to 15 in 6 seconds. Final speed is 15. Initial speed is 3. Time is 6. मेरे को तो आंसर पता है। सब इधर उधर घूम रहे हो, सब इधर उधर घूम रहे हो। Come on, people. So रणबीर, नील, अद्वितो, संयुक्ता, कुशाग्र, कमल, नंदिनी, श्रीधर, रिधिमा। अरे पोपट लाल, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए क्या करूंगी? 100 में से माइनस कर दूं तुम्हारा? What is this? What is this? Your initial speed is 3 meters per second. Your final speed is 15 meters per second. Your time is 6 seconds. What is the formula? Solving Shravya, solving the numerical. So 15 minus 3 upon 6 is 12 by 6. It is 2 meters per second. 2 meter per second. क्या आंसर है? 2 मीटर पर सेकेंड। पिटाई और नीचे बच्चा पार्टी की इसके लिए। अब नहीं कर रही मैं कॉल, इतना इजी क्वेश्चन गलत, मैं नहीं कर रही अब कॉल। पहले क्यों लीडर बोर्ड दिखाओगे? इंसाफ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आओ, दे रही हूं मैं तुम्हें 2 मिनट, मुझे इस क्वेश्चन में लाकर दो 100%। अब ठीक है सजनी, 2 मिनट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, 100% चाहिए। 3, 2, 1, go. Changu is traveling in straight line. He starts his journey with a velocity of 2 meters per second and acceleration is 0.25. What will be his final velocity after 1 minute? बेटा 100% तो नहीं आ रहा है, सबके आंसर इधर उधर है। सबके आंसर इधर उधर है।
सब इधर चीटिंग करने तो नहीं आए हैं? हाय बच्चे अनिल, यस बच्चे, आई वाज नॉट वेल, अभी भी आई एम नॉट वेल बट आई एम बेटर, थैंक यू। यस, बस आंसर आ रहा है मेरे पास। हेलो सुनीता। बैब्स गेमर, डी आंसर है, पता नहीं मुझे डी है कि नहीं है, पता नहीं मुझे। आंसर छुपा के रखना है वरना सब लोग देख लेंगे। कम ऑन, अभी पूरा 1 मिनट है। मैम क्लास 11 में कॉमर्स के साथ स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं क्या? बच्चे मुझे कॉमर्स का आइडिया कम है प्रथम, बट मोस्ट प्रोबेबली हाँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आई गेट इन्फॉर्मेशन, आई गेट बैक टू यू। ठीक है, ओके, व्हाट्स द आंसर? थैंक यू रश्मि, क्या बात है, कैसे गए सारे बच्चे पेपर? अच्छे गए? एवरीथिंग वेंट गुड? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? ये रणबीर क्या हो रही है, कैट्स और डॉग्स कहाँ से आ गए? बच्चे अनन्य सर बिजी है, आई मैसेज हिम, क्लास में हो तो ही इज डूइंग अ रिकॉर्डिंग, so he is busy. So श्रीधर, प्रणव, संयुक्ता, रणदीप, 100%, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? चंगू is traveling in a straight line. चंगू सीधी लाइन में गया है. His initial speed is 2 meters per second. Acceleration is 0.25 meter per second square. Time he is taking as 1 minute. So what is this? Acceleration is v minus u by t. v निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? a is v minus 2 upon 1 minute is 60 seconds. नहीं करा, नहीं करा, बिल्कुल ठीक नहीं करा, चीटिंग बीटिंग नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन सेकेंड्स, then you put into the formula and the answer is 70. तुक्का, तुक्का, कैलकुलेशन एरर, पिटाई। ओके, अगर 10 बजे तक, अरे टाइम हो रहा, अच्छा अच्छा, 2 मिनट सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, है ना अभिषेक? पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी, और तुम्हारा नाम भी अभिषेक है, बिल्कुल सही पिटाई करूंगी मैं। वो फोन नहीं उठाते ना, तुम्हें तुम्हें डांटूंगी, है अभिषेक, फोन नहीं उठाता तू? रणधीर, यहाँ पर इट इज अबाउट टू बी 10 बच्चे। Okay, so this is how you have to solve this question. So answer is, खा ले बेटा धृतु, यूनिट खा ले, भूख लगी है, सब खा ले, यूनिटी खा जा। चलो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन लिखो। Joe is slowing down on his skateboards. He starts at a speed of 5.5 meters per second and slows to 1 meter per second over a time of 3 seconds. What is Joe's acceleration? This is what you have to tell me. Okay? Now before I even try, so it is like after 10 he will be free. So we have to wait for 5 minutes. So इस 5 minutes का use सबसे अच्छा होना चाहिए. So I'll call him, no worries. But ideally, if you guys have been in 9th standard or in 10th standard and have not heard of Vedantu's courses, so this time I'll take this as a responsibility कि मैं आप सबको बता दूं कि वेदांतु पे courses अभी for 1 year course is at the least of prices. These prices are going to rise from 31st May. So if any of your friend wanted to join and they didn't, they are waiting for something, ask them to go right away because इसके बाद ये cost double हो जाने वाली है. Now what is this cost for? These costs are for subscription courses at Vedantu where you can learn with your master teachers in 3 different ways or 3 different modes. Light is a mode where you will get recorded session by your master teachers, favorite master teachers I can even say, and the class teachers in the class will be solving all your doubts live, along with live quizzes, live assignment, class notes and study material. But if this is something that you do not want, you want कि नहीं भाई मुझे तो recorded नहीं जाना है,
I want everything better. So in a better mode, this is the live classes done by your master teacher, but that cost even rises up. It goes to 40,000 for 1 year, where your master teachers will conduct your live classes, your doubts will be solved with your class teachers and your master teachers within the class, and everything you get as double. But एक middle way भी है, and that middle way is called classic. This is again recorded sessions by your master teachers, but you get the extra support of post class doubt solving. The last one is everything. The first one is a bit less, but the middle one is the middle way. So as per your pocket, you can go with any of these courses, bache. Right now, the 5,000 course after my code BA Pro is only 4,500. So there is a 10% off. So 5,000 की जगह आपको अभी सिर्फ 4,500 पे करना होता है. After 31st of May, you might have to pay 9,000 for the same course. तो अभी जो डिस्काउंट है वो ले लो. BA Pro है, अपने फ्रेंड्स को बता दो, and this will definitely help. अगर चाहिए कि लाइव क्लासेस में बैठ के पढ़ाई करो, so 40,000 is the course, and this is not just the cost for one subject, it's the cost for every subject: physics, chemistry, bio, math, social science, English, everything. Even this 5,000 is for everything. The only difference is the learning, the love or the enjoyment of learning live, and the live classes get sponsored as recorded with everything else live. So whatever you want to take, you can definitely go for it. Right? Here is your homework question, and let me try calling your Ananya sir in 1 minute. कॉल करें या एक सर को कॉल कर लेते हैं. एक सर को कॉल करें. यार फोन नहीं उठाते हैं, वो बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत ही बेइज्जती करते हैं. ओके, आई एम कॉलिंग. एक ऐसा ठीक है. नंबर नहीं दिखाना, नंबर नहीं दिखाना. हेलो, हाय सर, बिजी आप? सर मुझे कुछ बात करनी थी आपसे. आपके पास 5 मिनट है? सर 1 मिनट में मैं आपको कॉल बैक करती हूँ. ठीक है, 1 मिनट में करती हूँ. 1 मिनट में. शेख यार, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं उनसे क्या बात करूँ. तुम लोग प्रैंक कॉल करवा देते हो. प्रैंक ही नहीं समझ आई मुझे, मैं क्या बोलूँ. ओके बस ठीक है, आज की डेट ये हो गया है. थैंक यू वेरी मच. लेट मी शो यू योर लीडर बोर्ड. लेट मी क्विकली शो योर लीडर बोर्ड. अरे मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया. देखो, अनन्या सर के साथ आई हैव दैट ट्यूनिंग. मैं उनको कुछ भी बेवकूफ बना सकती हूँ. अभिषेक सर के साथ यार सर है वो. So Neil is on the top, Ranveer is second, Kamal is third, then it's Shravya, Nandini, Ridhima, Sridhar, Samyukta, Virat, Kushagra, Shubhayu, Sakshi, Sajini, Adrito and John. Super great. अरे यार, मैं बहुत कुछ बोलती थी पर उनके सामने भी मैं हो जाता है मेरा. छोड़ो. I don't know what to say. So people, take care. Have a good day. यार ये रणबीर प्रैंक कॉल ही थी यार. मेरे प्रैंक हो गए. तुमने मेरे से प्रैंक की जगह मुझसे ही प्रैंक कर दिया. ये होमवर्क क्वेश्चन सबको करना है. ठीक है, बाय. टेक केयर. गुड डे, गुड वीक अहेड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. पता नहीं